Good evening to one and all present here. I, Sresh Vadva, along with my co-partner Naman Garg, welcome you all on the behalf of Rotaract Club of Hansraj College in this webinar on the topic which would have crossed our minds in the recent days. Pros and cons of voluntary blood donation after this pandemic. First of all, I would like to thank my collaborating clubs without which this webinar is not possible. Rotaract Club of DSPSR, Rotaract Club of Verve, Rotaract Club of Drishti, Rotaract Club of USME DTU, Rotaract Club of Ghaziabad City North, Rotaract Club ECO, NSS Acharya Narendra Dev College, and RAC and Rotaract Club PJDAV Evening. So, despite a huge population, the demand-supply gap for blood units persists in many healthcare facilities in the country. According to a report by the World Health Organization, only 11 million blood units are available, whereas the demand is 15 million units. But this pandemic has made this situation more worse. People are more apprehensive about donating blood voluntarily. So, to have a detailed opinion on this, we have an expert from this field, a well-known face in Rotary District 3011 and 3012, Ms. Sonu Singh ma'am. Ms. Sonu Singh, a graduate in Science and Management, is having a 20 years of experience working in Rotary Blood Bank New Delhi as a Chief Communication Officer. She is presently member task force in NACO under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. She is pioneer in the voluntary blood donation program in Delhi NCR since 2002 at the inception of Rotary Blood Bank New Delhi. She has been creating awareness and doing motivational programs on voluntary basis in colleges and corporates of Delhi NCR. She has been awarded by the Delhi government for achieving the highest collection of 40,000 units in 1 year. Also, she has been awarded with the Rotary highest award of Rotary Paul Harris Fellow and many other vocational awards of service. We welcome you, ma'am, on the behalf of all. Very good evening to you. I am privileged to be part of the Rotaract, the Young Club. Thank you, Shesht Vadva, Naman Garg, and all the Rotaract clubs of 3011 as well as 3012. Congratulations to you that we have seen a good day today wherein we can think about voluntary blood donation, and the bad times of pandemic time is almost over, and I pray to God that we are healthy and our immune system is good, that we can help another human being. All of you must be aware, pre-pandemic, when you were a Rotaract, you were doing blood donation camp in the schools, in the colleges, and you were volunteering to motivate people to come forward. So what were the areas which you were key areas which you used to tell people to come forward and donate? One, that you have to be 18 years till 65 years of age. You should be healthy. You should not have any kind of ailments. You should not be empty stomach. Your hemoglobin should be 12.5. You should not have high BP or taking any kind of antibiotics or any kind of illness. So those were the times, were happy times when everybody used to motivate everybody, and they were fantastic camps. None of the camps which we did were less than 50 units. They were, all the Rotaract camps were mostly 50 plus units, 60 units, 70 units, and a lot of people used to get deferred also because they had some some drink previous night, or some they were on medication and all. But once the pandemic has come, all of you must have got highly impacted, in the sense that you must be at home, you were working from home, you were studying from home, and it has taken a toll on everybody's health. I must say it must have taken a lot of stress on your mind, that when will the right time come. So I'm happy to say that I can see all young and healthy faces today, and all of you joining back. I don't know, the colleges are still online. There's been talk that you will be having offline colleges. So there are certain precautions with COVID. One, when we are organizing the blood donation camp, we should have systematic approach, in the sense
The 4 COVID care precautions are that it should be, safe distance should be maintained from one donor to another donor. So when you collect people, you have to tell them, you have to give them confidence. Who are you? You are the leaders in the road tracks. You have to come forward and tell all the people that all the precaution will be taken from the medical team. Also, if you take a list of donors who will be coming forward or who has taken some interest, you can make a WhatsApp group, or you can write down the names, and these people should be called after every 10 minutes. The arrangement should be either in a community hall or a college room, big room, where you can put the beds with social distancing. You understand, everybody should be in their mask and everybody should be feeling healthy. If they have any kind of ailments, if they have some kind of fever, if they have any kind of cough and cold, you should send a notification prior to the camp that whoever wants to donate should be 18 to 65 of age. He should be feeling healthy and he should be healthy. If they are vaccinated, just note down, if they are vaccinated first dose, the gap between blood donation should be 15 days. Okay, if suppose I have vaccinated first dose, so I should have 15 days, that means 2 weeks of precaution. If I have second dose, then also it is 15 days. It is 2 weeks of precaution. So anybody asks you, there is so much confusion in the community, and the blood is very much needed nowadays. We are getting calls every day that they need donors. People are getting admitted now because for 1 year they were curtailing them, the doctors and everybody was saying that you just take medicine, no surgeries. All the admissions in the hospital were for COVID patient. Now, if there any pregnancy or any kind of surgeries, blood is needed. So we should all gear up. So what are the precautions? The same which you were promoting prior to the COVID pandemic was 18 to 65 of age. His weight or her weight should be minimum 45 to 50 kg. Hemoglobin should be 12.5 and above. Of course, on the campsite, hemoglobin will be checked. Everybody's hemoglobin will be checked. So minimum is 12.5 for blood donation. That is where you can donate blood. The weight should be 45 to 50 kg, 18 to 65, and no ailment. Everybody has to be very fit to donate blood. After blood donation, of course, we are going to do so many tests on the blood, but a person should be healthy. Healthy means that he should have no high BPs, he should not be on medication, there should be no fever, no cough and cold, or if they had COVID, if they were impacted by corona, the gap should be 1 month. Remember, if anybody had corona, आपको उनको बोलने का कि 1 महीने के गैप के बाद ही आप डोनेट कर सकते हैं. अगर उसने वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लगाया, 15 डेज का गैप होना चाहिए. अगर उसने सेकेंड डोज लगा लिया तो भी आपको बोलना है 15 डेज का गैप होना जरूरी है. So these are the things which you have to tell the donors when you meet your school, college friends who are above 18, when you organize as a road track, you are going to organize in the coming days in October, 2nd October. Then there is first week is joy of giving. People are celebrating, or you are putting the bus. You can get the bus and put it at Select City Walk, or you can put it at metro station, Vishwavidyalaya metro station, where the youngsters, once the college open, or some marketplace. So you have to take precaution from the police. You just give a letter to the police that we will take all precaution, and everybody should stand or come after 10 minutes. So there is a social distancing gap. Everybody should put a mask, and the blood bank will have their team who are wearing their PPE kit. So you have to give them confidence that हमारी टीम जो है वो PPE kit पहन के आएगी, मास्क सबने लगाया होगा, everybody will take precaution. एक एक करके सब लोग आएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, एक साथ भीड़ नहीं आएगी, because then there will be objection. कॉलेज में भी आपको पहले ही प्री डिसाइड करना है, मोटिवेट करना है, लाइक आई एम मोटिवेटिंग यू, इसी तरह आपको सबसे बात करनी है. बिकॉज अभी क्या है कि people were very nervous,
There were no requirement of blood because most of the hospitals were with COVID patient. Up jab when everything is open, there are going to be surgeries. Every day we get calls. People want blood. Earlier people wanted plasma. So you have to tell them and guide them. You are the Rotrax, you are the leaders of the district, the young leaders. You have to give them proper guidance कि आपका ये चीजें पैरामीटर्स ठीक होना चाहिए. On the camp site, your weight can be checked, your hemoglobin will be checked, and you have to tell your history truly. Understand? आपको अपनी हिस्ट्री पूरी सही सही बतानी है जिससे कि डॉक्टर डिसाइड कर सके कि whether you can donate blood or not. Understand? After the blood donation, you will be given juice and biscuit. So nobody is allowed to come for a blood donation camp with one tea and biscuit. अब सब बच्चा लोग जो कॉलेज आते हैं एक चाय पी के आ गए, एक बिस्किट खा के आ गए कि कॉलेज में ऑमलेट खाएंगे, बर्गर खाएंगे. पहले कुछ खा के आने का है when you come for a camp. ओके अपना पेट्रोल भर के आओगे तभी तो स्ट्रॉन्ग बन के ब्लड दोगे, राइट? सो नोबडी शुड कम एम्प्टी स्टमक. ओके और जिसको ब्लड से देख के डर लगता है, कई लोग बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, वो किसी को भी ब्लड देख के टन दे. सो उनको पहले ही बोलना है कि आप प्लीज मत आइए क्योंकि आप बेहोश हो जाएंगे. उसको देख के सब लोग भाग जाएंगे कैंप साइट से. सो यू हैव टू, पीपल विल कम फॉरवर्ड. लड़के और लड़कियां बोलेंगे कि सर मैं एक बार गई थी कैंप में, मेरे को चक्कर आ गया. उन्होंने ब्लड दिया ही नहीं है तो भी लोगों को इतना नर्वस और एंजाइटी, कई लोग को ब्लड को देख के होता है. नमन तुमने देखा होगा बहुत लोग नर्वस होते हैं तो उनको एंजाइटी होती है. तो यू हैव टू गाइड देम कि ठीक है आप मत आइए साइट पे, यू सिट इन योर कॉलेज और यू गो होम, बट डोंट कम टू द कैंप साइट बिकॉज आपको ब्लड देख के आपको चक्कर आ जाएगा. और क्या होगा, वो सारे जो लोग को हम मोटिवेट करके आए हैं वो सब लोग भाग जाएंगे आपको देख के कि माय गॉड व्हाट इज हैपन. अंडरस्टैंड? सो आपको इस तरह से हर एक डोनर से बात करना है. यू हैव टू गिव देम कॉन्फिडेंस दैट blood donation is totally normal, it is very healthy. Once you give 1 unit of blood is 350 ml to 450 ml. okay, if your weight is 60 kg, suppose मेरा weight तो अब 60 kg घर बैठ के हो गया है, तो मैं कितना दे सकती हूँ? 450 ml दे सकती हूँ. That means almost half liter. 450 ml शायद ये होगा, इतना बड़ा आप ब्लड दे सकते हैं. ओके बट अगर आपका 350 ml है, दैट मीन्स जनरली गर्ल्स का होता है 60 लेस देन 60 kg, तब वो ओनली 350 ml ब्लड दे सकती हैं. वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपका जब वेट देखेंगे. उसमें क्या होता है, वंस यू गिव ब्लड टुडे, सपोज यू आर डोनेटिंग नाउ, इन 24 आवर्स आपका फ्रेश ब्लड बॉडी ऑटोमेटिकली बनाती है. अंडरस्टैंड? आपने अपनी बॉडी में से ये 350, आपने सपोज 350 ब्लड दे दिया, तो बॉडी में जो गैप है, आप जूस पिएंगे, आपको बोलते हैं ज्यादा लिक्विड पिए, तो आप ये सब लस्सी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जूस पीजिए आफ्टर द ब्लड डोनेशन. फिर आपकी क्या होती है, बॉडी का जो वॉल्यूम है वो उसकी पूर्ति हो जाती है 24 आवर्स. अंडरस्टैंड? सो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता, कोई वीकनेस नहीं होती. लोग बोलते हैं हमें ब्लड डोनेशन से कहीं वीकनेस तो नहीं हो जाएगी, मैम हम तो अभी ऑफिस आए हैं, हमें फिर ड्राइव करके घर जाना है. तो आपको क्या प्रिकॉशन बोलते हैं कि यू प्लीज सिट आफ्टर द ब्लड डोनेशन. 10 मिनट आप बैठिए, आप जूस और बिस्किट लीजिए, आपका डोनर कार्ड बना के देंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन आफ्टर ब्लड डोनेशन एंड द डोनर इज सपोज टू सिट डाउन. Why? Because then the doctor can see, okay, इसने ब्लड डोनेट किया है, सपोज नमन ने ब्लड दिया है, वो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट वो ठीक लग रहा है, उसको कोई चक्कर नहीं आ रहा, ही इज नॉट फीलिंग वीक, वो आराम से जूस पिएगा, अपना बिस्किट खाएगा, उसको डोनर कार्ड देंगे और उसको जो भी गिफ्ट देना है, कॉफी मग है, वो सब दिया जाएगा. उसके बाद ही वो ही शुड लीव द साइट. ओके, so you after the blood donation you have to sit for almost half an hour and no exercise. जाते ही ये नहीं कि जिम चले गए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आज तो मैंने ब्लड दिया है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, आई विल शो टू माई गर्लफ्रेंड, मैं तो ऐसे देखो बैंडेड लगा के मैं अपनी फोटो भेजूंगा गर्लफ्रेंड को, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय. नो जिम.
जो लोग जिम करते हैं वो यहाँ पे तो आपको बैंडेड लगा है ना, वो यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए हीलिंग के लिए. सो एटलीस्ट 24 आवर्स नो जिम, नो स्विम एंड नो बॉक्सिंग और डांसिंग. ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सो दैट 24 आवर्स में आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली न्यू ब्लड बनाना है, न्यू आरबीसी बनाना है, which is very healthy. You know what is RBC? You must have studied in the school. Red blood corpuscles. So when you give blood, what happens? The body इतना आपने blood अपने body से निकाला, तो इतना blood उसको वापस बनाना है body को, right? तो ये जो है RBC बनाएगा body, red blood corpuscles बनाएगा, जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इट्स वेरी हेल्दी. वो नीचे से ऊपर तक आपको जैसे ही ब्लड बनता है तो आपको कई बार हल्का सा लाइट फीलिंग होता है, डॉक्टर बोलते हैं आप बैठ जाइए. सो दैट इज द टाइम द बॉडी में अंदर से ब्लड बन रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, फ्रॉम द फीट टू हेड, एंड दैट इज द रीजन यू आर टोल्ड कि आप थोड़ा रेस्ट करके ही जब ब्लड देंगे तो रेस्ट करके ही जाइए. सो 24 आवर्स में आपका फ्रेश ब्लड बनता है, विच गिव्स यू tremendous boost and immunity. So it is very healthy to donate. Everybody knows their blood group here. अगर नहीं है तो all of you should donate blood so that you come to know about your blood group, and all the reports जो हम blood पे टेस्ट करेंगे, HIV, hepatitis, syphilis, malaria, ये सब आपको email पे आ जाएगी रिपोर्ट. Okay? So these tests are very important because these diseases से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बीमारी होती है. अगर किसी को HIV है तो हम उस ब्लड को रिजेक्ट कर देंगे. अंडरस्टैंड? किसी को हेपेटाइटिस है हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. वी विल नॉट ट्रांसफ्यूज इट टू एनीबॉडी. सो आजकल जो थैलेसीमिया बच्चे हैं जिनका ब्लड बॉडी में नहीं बनता है आरबीसी, उनको बहुत ब्लड की जरूरत है. एवरी मंथ दे नीड ब्लड. So this is how you have to gear up, and you have to organize blood donation camps. You can give small talks, you can make posters, you can make some clippings on WhatsApp and promote and tell the world that it is very normal and healthy to donate. And if it is 15 days after the vaccination, you can donate. 1 month after COVID, you can donate. But you have to feel good and healthy. If you are ill, please do not go out or think of donating blood. So blood donation is the most beautiful charity one can do in their life. Every 3 months one can donate blood. Every 3 months. Generally students and companies, people, they donate after 6 months, 1 year. एक बार तो लोग साल में एक बार डोनेट करते ही हैं कि मैं तो अपने बर्थडे में डोनेट करूंगा, या मेरे कैंप, कॉलेज में कैंप लगेगा तब मैं डोनेट करूंगा. सो वंस इन अ वाइल यू शुड डोनेट, बिकॉज आपका तो फ्रेश ब्लड बन जाएगा. एंड एवरी टाइम वी आर गोइंग टू चेक यू. और डोनर कार्ड पे आपकी फैमिली आपको ब्लड विदाउट एनी टेस्टिंग, कोई चार्जेस नहीं है. आप अपने फैमिली के लिए वो डोनर कार्ड रखिए, जब भी जरूरत होगी उसके ऊपर फोन नंबर है, आप रोटरी से ले सकते हैं. So these are the very simplified way I have put forward when you can do blood donation, what should be done, what should not be done, what precaution you should take, and we have to start working on blood donation. And I am available anytime. Anybody needs help to talk to anybody, कुछ आपको और planning में बात करनी है, आप मेरे को phone करके कर सकते हैं. Thank you so much. It was wonderful talking to you all. And if there are any queries, any questions, please let me know. Shish, you can take forward. Yes, ma'am. Ma'am, we have filtered out some questions on the basis of the Google form we released for the registrations. We have some questions from it, and then we will proceed for the audience to have some questions with you. Okay. Okay. So there was one question. Yeah. Can a person donate after having a tattoo on his body? 1 year gap. Okay. 1 There year should be gap. Yes, I will tell you the reason. जो tattoo वाला person है, he is using the needles. Okay. There is,
and they are all sitting all over the market. We are not sure if the needle is safe or not safe, whether he is using the same needle to Sonu Singh and then using it to somebody else. Okay, so that is the reason कहीं मेडिकल कॉलेज में तो आप नहीं जा रहे हो, हॉस्पिटल में तो टैटू नहीं कराने जा रहे हो, इसलिए 1 साल का टाइम देते हैं. अगर उसमें कोई आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, इट विल कम फॉरवर्ड, तो 1 year गैप इज रिक्वायर्ड आफ्टर टैटू. Okay, ma'am. Thank you so much. And Ma'am, there is one more question. Yes. Is there any risk of blood donation, etc., after the blood transfusion from an individual who has successfully recovered from corona illness? Is there any chances of blood clot formation or any other, like any physical change in body after the blood transfusion? blood transfusion? Yeah. There has not been so much data to comment today. It's Okay. very new subject, because everything was closed and there were no blood donation happening, and after vaccination one is very safe to donate blood or take blood, as transfusion. So अभी ऐसा कोई डेटा है नहीं जिससे कि ये पता चले कि कोई आपको साइड इफेक्ट्स हुए हैं. There is no such data. आपने देखिए, आपने भी तो कितने वैक्सीनेशन बचपन से लगाए हैं ना. पोलियो वैक्सीनेशन है, फिर आपने MMR लगाया, टिटनेस का लगाते हो जब आपको कोई डॉग काटता है, तो ये सब वैक्सीनेशन बॉडी में रहता है. I will also tell you one interesting thing. When we went to American Embassy for blood donation camp, हम जब उनके यहाँ कर रहे थे American Embassy, तो उनके डॉक्टर ने बोला कि हमने सबको वैक्सीनेशन, जितनी वर्ल्ड की सब वैक्सीन है, फ्लू ये वो सब चीज हमने लगाई हुई है. वो इतना प्रिकॉशन लेते हैं. और इंडियंस का ये है कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना. सो वैक्सीनेशन तो वो अपनी बॉडी में आपके अंदर एंटीबॉडी बना के वो फाइट कर रही है ना. हाँ जी. Okay. Ma'am, there is one more question. Yeah. Can individuals who are on medication donate blood? What kind of medication? You have to show. See, अगर आपको थायराइड है, आप थायरोक्सिन कोई भी हार्मोन खा रहे हैं, आपको अलाउड नहीं है. सम एंटीबायोटिक, देखो सिंपल सी बात है, आपने अपनी बॉडी में क्या मेडिसिन डाला है वो ब्लड से ट्रांसफ्यूज होगा. अगर वो ब्लड किसी को जाएगा, सिर्फ यही डॉक्टर देखते हैं. कुछ मेडिसिन जो हैं वो जो आपकी बॉडी के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट, हमने विटामिन खाई है, सपोज मैंने बी कॉम्प्लेक्स खाया, वो नहीं होगा ट्रांसफ्यूज. अंडरस्टैंड. तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं. आपको जुकाम खांसी होती है, आप एंटीबायोटिक खाते हो, तो डॉक्टर आपको सीधे बोल देता है नो यू विल नॉट डोनेट, बिकॉज पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक जो एडमिट है उसको तो चढ़ाया कोई एंटीबायोटिक, आपका भी एंटीबायोटिक का ब्लड चला गया तो उसको रिएक्ट कर सकता है ना. सो एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन विच इज ट्रांसमिटेड, डॉक्टर विल से नो टू यू. Okay, ma'am. एंड वैसे भी देखो, अगर कोई बीमार है, कोई मेडिकेशन ले रहा है, वो बाद में डोनेट कर सकता है. आई हैव सीन वन वुमन, उसने बोला हमने 2 दिन तक वो मेडिसिन खाई नहीं बिकॉज आई वांटेड टू डोनेट ब्लड. यू सी. Ma'am, there is one more question. या Ma'am, what are the side effects of donating blood? साइड इफेक्ट्स? Yes, ma'am. There are no side effects. If you are healthy, you can donate blood. There are no side effects. You Okay. have to take precaution. अब जाके आप जिम चले जाओ, पार्टी करने चले जाओ, अगर बॉडी को रेस्ट चाहिए ब्लड डोनेट करने के बाद, बॉडी में नया ब्लड बन रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप रेस्ट करिए ना. There are no side effects. Okay, ma'am. Everybody donates blood. ब्लड तो वैसे भी 120 डेज के बाद उसके सेल खत्म हो जाते हैं, नया सेल बनता है. सो वैसे भी आप 3 months के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हो. There are people who have donated 100-120 times. कभी वो प्लेटलेट देते हैं, कोई ब्लड देता है, तो वो क्या होता है कि उससे आपकी हार्ट इज गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपको नया फ्रेश ब्लड बनता है. वो लॉन्ग लाइफ के लिए वेरी गुड. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू. एंड Now- बता दूं, गर्ल्स का भी वो तो फेयर एंड लवली गार्गी कॉलेज की लगाना बंद कर दिया. उन्होंने बोला मैम आप जब से ब्लड डोनेट करवा के गए, हमारे फेस पे नेचुरल ग्लो आ गया,
फ्रेश ब्लड बना, हमने फेयर एंड लवली फेंक दी, एंड अब बॉयज मेरे को बोलते हैं फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के, मैम हमने भी अब ब्लड डोनेट करना, गर्ल्स का ग्लो है तो हम भी ग्लो होंगे। सो इट्स वेरी गुड टू डोनेट ब्लड। ओके, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो ड्रैकुला हूँ, खूब ब्लड लिया सबसे मैंने इतना सारा। बट इट्स गुड, यू शुड डोनेट ब्लड। थोड़ा सा देने में क्या है। Now we are open for the questions. Yeah. Anyone who wants to ask question can unmute either or can write in the chat box. We will take that. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, what are the guidelines about a pregnant female or a breastfeeding female? Pardon? Ma'am, what are the guidelines about the breastfeeding female or a pregnant female? Okay. See, one should logically मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बॉडी है, एक वुमन की बॉडी है जो कि अभी उसने बेबी को पैदा किया है, प्रेगनेंसी है, तो वो प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है कि बॉडी, वुमन की बॉडी से ही वो बच्चे को फीड हो रहा है इंटरनली, उसके बाद उसका ब्लड कैसे लेंगे? इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट राइट, शी कैन नॉट डोनेट ब्लड। ओके, एंड इफ शी इज ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। इवन आपको जॉन्डिस होता है या कोई भी बड़ी बीमारी होती है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप देते हैं आपकी बॉडी को, उसके बाद ही आप डोनेट करिए। ओके, so you are not allowed to donate if any woman is breastfeeding or if any woman is pregnant. She is not allowed. Even if a female is having her periods, every month periods होते हैं, उसके 10 days के बाद ही वो डोनेट कर सकती है, बिकॉज उसके बॉडी से वैसे ही ब्लीडिंग हो रहा है, और वो ब्लीडिंग के बाद वो वीक हो रही है लड़की, उसके बाद वो एटलीस्ट उसको 1 हफ्ता चाहिए जिससे कि वो अच्छा खाए और उसका हीमोग्लोबिन ठीक हो। दैट इज द रीजन जो लड़कियां आलू पराठा खा के हैवी वेट दिखती हैं और वो बर्गर खाती हैं, चाउमीन खाती हैं, वो अंदर से बहुत वीक होती हैं। हमारे जब ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एनीमिक होती हैं, और सब बोलते हैं तो भाई ये तो सुपर वुमन है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, और इससे मैडम 2 ले लीजिए तो देखिए 70+ वेट है इसका, पर वो उसका हीमोग्लोबिन 11 होता है। So most of the girls don't eat the right things, This is the big issue, and I keep on telling the girls कि कुछ नहीं है तो काला चना खा लो, एप्पल जूस पी लो, एक एप्पल अपने बैग में रख लो, बिकॉज हीमोग्लोबिन में आप अगर उसको हीमोग्लोबिन में देखोगे क्या है उसका इंग्रेडिएंट, अगर केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। हीमो मीन्स ब्लड एंड ग्लोबिन मीन्स ऑक्सीजन। तो आपके ब्लड से अगर आपका 12 है हीमोग्लोबिन या 11.5 है, तो आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है ब्रेन में जाता है। तभी कई लड़कियों का चक्कर आता है, क्योंकि उनका एनीमिया हो जाती है, वो वीक हो जाती है, उनका जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन या आयरन कंटेंट इज लो, एंड दे फील वेरी वीक एंड वेरी लो एंड वेरी टायर्ड। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट गर्ल्स, स्टार्ट ईटिंग एवरी 2 आवर्स, अपने बैग में ये सब चीजें रखो, हाई प्रोटीन रखो, आयरन लो, ये सब चीजें आप खाइए जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो एंड यू फील स्ट्रॉन्गर। Ma'am, we have one and more question asked Yeah. by Arushi Sharda. Is it safe to donate blood to babies? टू बेबीज? Yeah. बेबी, हाँ, बेबी को इतना ज्यादा नहीं लगता है। अब जैसे आपका ये 350 ml एक बंदे को चढ़ाना, तो इसका आधा ही लगेगा। उनका छोटा पाउच होता है। बेबीज को भी चढ़ाते हैं जब बेबी में कोई वीक बेबी पैदा हो या उसकी कोई सर्जरी हो, तो ब्लड को तो ब्लड ही दे सकते हैं ना। आई मीन इट्स मेड इन आवर ह्यूमन बॉडीज ओनली, यू कैन नॉट गिव एनीथिंग एल्स। सो बेबीज का जो पीडियाट्रिशियन है, वो बेबीज का कोई सर्जरी है या उसको कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं ब्लीडिंग हो गई या बेबी वीक है, तब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो थोड़ा छोटा बैग होता है, बेबी का साइज छोटा, बेबी का बैग भी छोटा, है ना। Okay, ma'am. any more questions? So are you all thinking of organizing in your college once the college opens?
Yes, ma'am. We are planning to do so. or in your RWA also you can do. Yeah. आप लोग कहाँ Yes, कहाँ ma'am. से हैं? You are श्रेष्ठ, you are in Sonipat. Yeah. Yes, ma'am. Okay. And Dhruv, Ma'am, I'm from Ghaziabad. गाजियाबाद में कहाँ? I'm Lohiya Nagar. ओके ओके, वहाँ तो बहुत सारे कॉलेज हैं. एंड नमन, I am from Bulandshahr, Uttar Pradesh. कहाँ से? Bulandshahr, Uttar Pradesh. बुलंदशहर. ओके ओके, अच्छा अच्छा. एंड लकी? Ma'am, I am from Andhra Pradesh. हाँ, बट तुम्हारा आंध्र प्रदेश में भी तो कॉलेज होगा. No, Karnool, ma'am. Like हाँ, district. इवन टेम्पल्स में भी कर सकते हैं. अगर कुछ गैदरिंग हो तो उनको भी बात कर सकते हैं. आयुष, वेयर आर यू फ्रॉम? आयुष, हाय, ब्लू शर्ट, अनम्यूट. आवाज नहीं आ रही. Yeah. Hi. हाय. सो अपने कॉलेजेस में जब कॉलेज खुलेगा तब कर सकते हो. अभी तो पब्लिक प्लेस में ही कर सकते हो. अभी तो पीपल आर नॉट गोइंग टू कॉलेजेस. कंपनीज में भी कम लोग हैं. और यू कैन मेक अ रिंग ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, एंड डोनेट इन योर कम्युनिटी. वहाँ पे 35-40 अंकल को भी बोलो कि सब लोग आए, डोनेट करें. ऑल ऑफ यू शुड ट्राई. Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? आयुषी, आयुषी बहुत वरिड लग रही है. So none of you have donated any time? You guys, have you donated blood? I have donated, ma'am, Wow, 3 times. good. 3 times. कितने? Yes, What ma'am. is your age? I am 19. 19 में तुमने 3 बार दे दिया. Actually, I have thought कि I will donate regularly. So everything once you donated. Yeah, Which after is your blood everything. group? I'm B positive. Okay, good good. तुम्हारे पापा तो कैंप कराते हैं. Yes, ma'am. Yes 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 yes. No. Respected and today, as we come to the end of the session, Yes. respected and our most distinguished speaker of the day, Miss Sonu Singh ma'am, and our beloved conveyor, Palak Anuj ma'am. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making session such a resounding success. I, on behalf of Rotaract Councillors Chapter, first of all, spread my most sincere thanks to the chief guest, Miss Sonu Singh ma'am, who gave her vital time from her busy schedule to grace this webinar for ignoring necessary work and sharing us with valuable information. Further, a big thanks to Palak Anuj ma'am, conveyor of Road Track Club Hansraj, for extending support to today's event. I mention my sincere sense of gratitude to the entire team who had put up the efforts in making the event successful. I would like to place my hearty thanks to all the volunteers and participators because of whom we made this meeting possible. Once again, I thank you all for cordial cooperation and have a great day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everybody. It was such a pleasure to see all of you and smiling faces. And I hope we have good times ahead. We can move around with all the precaution and do whatever we want to do in our lives. So you have to save people's life. Even if you take 2 to 3 donors in a small blood bank or a hospital, please come forward and guide everybody and advise everybody. Be a leader in your own community. Okay, you don't have to be in the college. You can be a leader and a guide in your own community and say what it starts from me. I will go and donate. Would you come with me? Would you come with me? And put a SMS, put a photograph that you have donated. That will be ideal situation as a true leader. Okay, Shesh, you have donated. Somebody said he's donated 15 times. कौन है भाई? Yes, ma'am. किसने दिया 15 बार? It's Prabal Garg, I think. Prabal Garg. Oh,
My salute to him. I will give him a certificate, okay? If he SMS me his address and everything, I will send him a certificate. Okay? Thank you so much. It was wonderful, fantastic. Thank you for being here and thank you for inviting me. It was my pleasure and it was lovely to share all the valuable information which was much required, which is always not clear on the Google. You know, sometimes it is misinformation. So it was very important for me to also communicate to everybody. Thank you, Shesh Padma and all the Rotaract clubs. Thank you so much. Fantastic. And I will call you when I do a blood donation. I will SOS you. So if you guys can come, you come over. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye.